गुड इवनिंग देखो इंडिविजुअल डिफरेन्सेस आम क्लास 2 सो या पूर्व मुझे गोटे क्लास देती देखो ये रेकर्डिंग ये वीडियो हो कहीं आम मैक्सिमम पिला ओएवीएस अप्लाई करेतु से लाइव क्लास कर पारना तो लाइव क्लास रे अल्प पिला लाइव क्लास रे भल लगुनि तो सेम ये आम तो डाउट क्लियर भी क्लास करवा तो रेकर्डिंग क्लास आपड़ पाइबे ठीक टाइम रे आउ दुई कथा आपन को पीडीएफ मु देदेवी आपन कौन जो ग्रुप रे मु पीडीएफ देदेवी आपन को बुझिपारे तो तापर आमर ओएवीएस सैला पर आम लाइव क्लास जमती आमर होतला सेमती हम बुझिपारे तो चलो आम देखा आम नवा कौन कौन एती आम कम्प्लीट करदे आज सो रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जोटा आमर थिला से दिन आम तो या विषय टी कम पढ़ी मुझे कही या विषय आपको डिटेल्स पढ़ा बोली कहीं या क्वेश्चन आस लंग क्वेश्चन आमर जमीक आपनकर जो डॉग्स आउ हॉलैंड 1947 हेरिडिटी की डिफाइन कमी करते गोटे हेरिडिटी कौन कि सब प्रकार स्ट्रक्चर थाए जमीक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस और कैपेसिटी जोटा कि पेरेंट्स ठारू डिराइव होकर आसता है जोटा पूर्व क्लास हम पढ़ी और अदर आंसेस्टरी और स्पेसीज सो ये सब कौन पेरेंट्स ठारू जो गुड़ाक सब आसी था कहला what we get from our ancestors stuck through our parents at the time of fertilization of the ovum of mother by the sperm of the father is in the form of chromosome genes in the respect classical constituent है कि ये जो आम फर्टिलाइजेशन टाइम रे मदर जो ओभम हो फादर स्पर्म है कि जो आपंकर जो क्रोमोसोम जेन्स रहा ये सब कौन कि क्लासिकल कन्स्टिट्यूएंट होता है जोटा कि आम पाई था तो इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स आर द टाइम ऑफ conception makes of the native capital and endowment of an individual there are present within him in the form of sum total of the traits basically prevents the fertilized ovum these are called hereditary factor preventing an individual तो ये गुड़ा कौन कि हेरिडिटी फैक्टर था जो कि इंडिविजुअल को कौन कि प्रिवेंट करता है आम जहाँ भी आम पेरेंट्स ठार पाई था है तो यार कौन रोल रोचे हेरिडिटी इन जेनेरेटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस कौन ना हेरिडिटी फैक्टर जो कौट बिगिन होना जो इन्फ्लुएंस राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन ऑफ द चाइल्ड थ्रू द ट्रांसमिशन ऑफ क्रोमोसोम एंड जेन्स ऑफ इट्स ancestral stock from its immediate parents जहाँकि इमिडिएट पेरेंट्स ठार जहाँ भी आमर कटी कौन कि ट्रांसमिशन हो क्रोमोसोम हो जेन्स हो है द रोल ऑफ दिस फैक्टर इन प्रोवाइडिंग यूनिकनेस टू द पर्सनालिटी ऑफ द बॉर्न चाइल्ड एंड इन प्रूविंग टू बी ए सिग्निफिकेंट फैक्टर इन जेनेरेटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस है कि जहाँ भी ये आम कौन कि यूनिकनेस गोटे पर्सनालिटी प्रोवाइड करता है है कि गोटे बॉर्न चाइल्ड रे सब कौन कि हेरिडिटी द्वारा आसी था जो ट्रांसफर होता है पेरेंट रो सो कौन था ना हेरिडिटी डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड सो हेरिडिटी ही डिटरमाइन करता है गोटे चाइल्ड कौन हो मेल हो कि फीमेल है आम जानते जो केतना 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम थाए द स्पर्म आ ओवम टोटाल होता है कौन 46 सो आउट ऑफ दिस फास्ट 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड ऑटोजोम्स कहला जो फास्ट 22 पेयर जो रहा क्रोमोसोम आम ऑटोजोम कहती आउ ये जो ऑटोजोम जो था ना ये रेस्पॉन्सिबल होता है कौन डिसाइडिंग और डिटरमिनिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एंड स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ आवर बॉडी आम बॉडी जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन रही ये जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम था ये कौन करता है ना रेस्पॉन्सिबल होता है आ जो रहा रिमेनिंग 23rd पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम वेदर द बॉडी टू बी बॉर्न शुड बी ए बॉय और ए गर्ल एंड व्हाट सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक्स शुड इट पोजेसेस एंड डिसाइडेड बाय द मेकानिज्म सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फादर एंड द मदर लेट अस हैव ए डीपर अंडरस्टैंडिंग दिस मेकानिज्म सो यही मेकानिज्म को आम टे भल भाव बुझा केमी आम कौन कि ना जो रिमेनिंग 23rd पेयर रोचे जे कि डिसाइड करता है आइदर बेबी कौन गर्ल हम या बॉय हम सो ये आम देखले कौन कि देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम रोचे गोटे एक्स क्रोमोसोम यूजुअली जे कि साइज रे बिग थाए आ वाई क्रोमोसोम जे कि आम जब कंपेरेटिव करवा एक्स सहित सी स्मॉल थाए कहला मेल चाइल्ड रे 1 मेंबर ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम लाइक मेल चाइल्ड रे कौन कि सेक्स क्रोमोसोम जो था 1 मेंबर से खोजी एक्स क्रोमोसोम जे कि कंट्रीब्यूट करता है मदर को द्वारा ये कंट्रीब्यूट होता है यहाँ जानी ये साइंस पिला तो जानी आउ अदर रहा वाई जे कि
कंट्रीब्यूटेड क्या द्वारा होता है फादर माने एक्स क्रोमोजोम जे कि बिग थाए मदर द्वारा कंट्रीब्यूट होता है वाई क्रोमोजोम जे स्मॉल थाए फादर द्वारा कंट्रीब्यूटेड होता है सो इन ए फीमेल चाइल्ड दिस एक्स क्रोमोजोम वन फ्रॉम ईच पेरेंट आर एक्स क्रोमोजोम है कि सो वन पाई था कौन पेरेंट्स मान देखिए एक्स क्रोमोजोम ऑल एक्स हैव एक्स क्रोमोजोम बट स्पर्म सेल मे कंटेन आइदर टाइप कला सबू जगह कौन कि एक्स क्रोमोजोम था कि स्पर्म कौन कि आइदर एक्स थाई पारे therefore a mother role in determination of their baby sex is quite neutral जहाँफल कि आपंकर जो बेबी रो जो मेल या फीमेल हमारा मदर जो डिटर्मिनेशन थाए टा क्वाइट न्यूट्रल थाए at the time of conception she can contribute only one type of sex chromosome जो कौन की conception नहीं था से केवल गोटे टाइप सेक्स क्रोमोजोम कौन करता है ना कंट्रीब्यूट करता है दैट इज एक्स क्रोमोजोम much depends upon the possibility of the type of sex chromosome X or Y that may be transmitted by sperm cell of the father है father small sperm cell ठारो ये कौन की transmitted होता है X और Y it X chromosome is transmitted the child will be female जदि X chromosome transmitted है father ठारो ताल child कौन है जो female हबो और जदि Y chromosome transmitted हबो ताल child कौन हबो male हबो thus the father is biological more accountable for determination of sex is baby to be so it biologically कौन की father more responsible थांती कौन की child रो sex को either male या female है ना तापर हेरिडिटी आउ कौन कंट्रीब्यूट करे सिग्निफिकेंटली टुवर्ड्स फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन जेमती कि मोस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स रिलेट टू आवर बॉडी मेकअप इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शनिंग आर वेल डिसाइडेड एंड गाइडेड बाय हेरिडिटी हम देखले आम बॉडी जो स्ट्रक्चर व फंक्शन हेरिडिटी द्वारा होता है सम चिल्ड्रेन हैव ब्लू आईज एंड अदर हैव ब्लैक आउ ब्रो है कि कार ब्लू आईज था कार ब्लैक आउ ब्राउन बा था certainly this difference is actually brought out by their genetic differences क्लाइज वो डिफरेंसेस कौन आम जेनेटिक डिफरेंसेस द्वारा पाई था सेम इज द केस विथ द कलर एंड टेक्सचर ऑफ द स्किन हेयर हाइट फेशियल आउटलुक एंड अपीयरेंस ब्लड टाइप फिंगरप्रिंट्स एटसेट्रा ये सब आम पाई था द सन और द डॉटर ऑफ जापानीज और चाइनीज नेशनल कैन इजिली बी रिकग्नाइज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर इनहेरिटेड बाय देम फ्रॉम द पेरेंट्स किंतु जदि आम जापानीज आ चाइनीज सन आ डटर कौन आम इजिली रेकग्नाइज कर पेरेन्ट्स फिजिकल स्ट्रक्चर द्वारा किंतु अफगान और जर्मान बॉय और गर्ल विल डेफिनेटली हैव वेल बिल्ट बॉडी स्ट्रक्चर एंड टॉल स्ट्रक्चर इन कंपैरिजन टू एन एवरेज इंडियन बॉय और ए गर्ल है इधर अफगान जर्मान कौन कि कौन कि बॉडी स्ट्रक्चर बहुत भल था टॉल था यदि आम कंपैरिजन करवा इंडियन बॉय और गर्ल दिस डिफरेंस डेफिनेटली क्रिएटेड बाय द मीन्स ऑफ द रेस्पेक्टिव हेरिडिटी कंट्रीब्यूशन है सो ये डिफरेंस कौन की हेरिडिटी कंट्रीब्यूशन द्वारा मिलता है कला डिफरेंस एक्सक्यूज मी ये डिफरेंस को छाड़ी जमी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर आ बॉडी मेकअप हेरिडिटरी फैक्टर आर ऑल्सो सेट टू बी सोल कॉज फॉर सम डिजीज लाइक जो ये हेरिडिटरी कॉन्स्टिट्यूशन भी बॉडी स्ट्रक्चर भी डिजीज आता है जमी ट्यूबरक्लोसिस टीबी कैंसर हेमोफिलिया schizophrenia and other abnormality. These diseases are result of defect in genes and chromosome and are passed on to subsequent generation. ये कि subsequent generation में भी pass करता है. Along with other necessary physical aspect, the psychological setup of our mind is also well inherited by the child. कला जो अपन जो रहला कौन psychological setup भी हमार कौन की child द्वारा well inherited होता है. The role of heredity as determined by physical constitution or body makeup become questionable, especially in situations in which the parents are black color while the child is white. So like सब क्वेश्चन आसता फिजिकल कन्स्टिट्यूशन बटर जो पेरेंट्स ब्लैक था चाइल्ड कौन था व्हाइट था केमती है व्हाइट तो एमती क्वेश्चन आसी था जमती कि पेरेंट्स कौन था ना जीनियस था जो कि चाइल्ड कौन की इडियट था से क्षेत्र भी क्वेश्चन आसता है जमी कहला चाइल्ड डज नॉट इरियन द ब्लाइंडनेस लैमनेस और मेंटल डिसऑर्डर इज पेरेंट्स है कि चाइल्ड पाखे जो पेरेंट्स जो मेंटल डिसऑर्डर था चाइल्ड पाखे जो न था सेटा भी हमको एमती क्वेश्चन आसता है चाइल्ड डज नॉट रिसेंबल एनी ऑफ हिज सिस्टर्स और ब्रदर कहले चाइल्ड भी सिस्टर और ब्रदर भाई भी जब न देखाला है कि ताल भी आम क्वेश्चन आसता सो कंट्रीब्यूशन ऑफ हेरिडिटी टुवर्ड द बर्थ ऑफ ट्विन्स एंड द रिलेटेड इंडिविजुअल है कि जमी आम देखा
ट्विन्स इन रिलेटेड इंडिविजुअल जो हेरिडिटी कौन कंट्रीब्यूशन करता है समटाइम्स देयर आर बर्थ ऑफ ट्विन्स एंड मल्टीपल्स very often they are found to differ most from their sibling in many aspect क्लास समटाइम्स कौन कि ट्विन्स होता सिबलिंग ठार से कौन कि डिफरेंट होता नॉट ओनली आर द ट्विन्स फाउंड आर डिफर फ्रॉम देयर काउंटर पार्ट in spite of their common sense in their heredity stocks but also the different as individual हिसाब से भी ସେମାନେ कौन कि डिफरेंस होता जमीक there are two distinct different types of twins namely identical twins and fraternal आपनकर twins था identical twins माने कौन usually fertilization of one ovum produce one offspring sometimes however when the ovum split as a result of fertilization the two parts fall to unite together है कि तो जो फर्टिलाइजेशन जो होता है ओवम प्रोड्यूस होता है से यहाँ देखा मिलता है जो कौन कि मिसिकी यूनिट गोटे बनई था दि रिजल्ट इज दैट इज पार्ट डेवलप इनटू ए कंप्लीट इंडिविजुअल जहाँफल कि रिजल्ट कौन कि इज पार्ट डेवलप होता है गोटे कंप्लीट इंडिविजुअल देता है द ट्विन्स फॉर्म थस आर कॉल्ड आइडेंटिकल बिकज दे कैरी एक्जाक्टली द सेम जेन्स है कि सेम जेन्स आनी था से ट्विन्स जो होता है सेम पर देखा जाए दे पजेसेस ऑलमोस्ट द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेफिनेटली द सेम सेक्स है कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और सेम सेक्स भी ये जनरेट होता है सेमती फ्रैटर्नल ट्विन्स किए नॉर्मली इन वुमेन ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल पीरियड ओनली वन ओवम इज मैच्योर बट इट मे हैपन दैट टू और मोर ओवा may mature simultaneously get fertilized simultaneously by two different sperm है कि दुईटा डिफरेंट स्पर्म द्वारा ये कौन कि फर्टिलाइज होता है जो कौन कि ना इज मेंस्ट्रुएशन पीरियड टाइम रे the result is that two different zygotes are produced the individual thus produced are known to be fraternal twins or non-identical twins है fraternal माने हमें non-identical twins कही परिबा they have a different combination of chromosome and genes as both are fertilized in different sperm है ये बेसिकली कौन कि बहुत कम क्षेत्र में देखा को मिलता है डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन था क्रोमोसोम fraternal twins therefore are sure to different many traits they need belong to the same sex. So the above information about twins and multiple help us to draw a conclusion about the hereditary factor bringing individual difference as the following. तो ये क्षेत्र में देखिले individual difference केमती आसतो जेमती क्या twins are bound to differ from sibling as they are inherited from different set of chromosome and genes क्लास जो twins थांती siblings कौन है थांती different है थांती because of different set of chromosome and genes. Fraternal twins differ from each other on account of inheritance and different combination of the genes and chromosomes. जो fraternal twins था भी माने भी different था inheritance और different combination genes chromosome को नहीं की. As far as identical twins are concerned, they may exhibit too much of similarity and resemble on account their common hereditary stock. So identical twins कौन की था ना similarity अधिक देखिए हमको मिलता है. अब देखिए हमें environment Simply Boring, Langfield and Well 1961 ने कौन environment is everything that affect the individual expected genes है कि कला genes को छाड़ी की और जहाँ भी एटी इफेक्ट पकाए सेटा हमें कौन कहते environment कहते हैं so Woodworth and Marcus 1948 रे कौन कहले environment cover all the outside factor that have acted on the individual since it began life है ना तो ये कौन कहते environment cover करे सबू factor जे कि आमर इंडिविजुअल सिंस जो लाइफ कौन कि आरंभ करें बिफोर बार द मदर ओम इज द प्लेस वेयर दिस फैक्टर प्ले देयर पार्ट सो बर्थ पूर्व मदर ओम हूँ गोटे पर्टिकुलर प्लेस जे कि ए रोल प्ले करें जमी द फर्स्ट गेट्स इट्स नरिशमेंट फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम ऑफ इट्स मदर द साइकोलॉजिकल स्टेट्स ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हर हैबिट एंड इंटरेस्ट ऑल इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द फेटस मैंने जिते कौन था ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम मदर जहाँ भी हैबिट थी इंटरेस्ट थी से अनुसार कौन कि जो फेटस था से अनुसार से डेवलप होता है आफ्टर बर्थ द चाइल्ड एक्सपोज टू न्यूमरियस एनवायरमेंटल फोर्सेस दैट प्योरली एक्सटर्नल है कि बट चाइल्ड बर्थ है जो कि एनवायरमेंट से जहाँ भी किसी पाई था से प्योरली कौन कि एक्सटर्नल होता है जहाँपर कि ये दुईटा टाइप आम को डिवाइड कर गोटे जो फिजिकल फोर्सेस आ गए सोशल और कल्चरल फोर्सेस जोटा कि फूड वाटर क्लाइमेट फिजिकल एटमोस्फियर ऑफ द होम school, village or city, the natural resources available are included in these physical forces. While the parents, member of the family, friends and classmates, neighbor, teacher, and the communication, the recreation, religious places, clubs, library, etc. are included in social forces.
ये सब कौन आम सोशल फोर्सेस आम इनक्लूड कर सो दिस डिफरेंट फोर्सेस हाव ए desirable impact on the physical, social, emotional, intellectual, moral and aesthetic development of the individual. Their influence is continuous on the one begins with the emergence of life and follows till death. ये कौन कि पूरा कंटिन्यूस चलता है लाइफ सारा आउ टिल डेथ पर्यंत. सो एक्सक्यूज मी एनवायरमेंटल रोल कौन रही इंडिविजुअल डिफरेंस रे ना आम देखिले जे हेरिडिटी फैक्टर जे रोची ट्रांसफॉर्म होची से कौन आर द देयर कंसेप्शन बाय इमीडिएट पेरेंट्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव क्रोमोसोम जेन इन दिस वे एक्चुअल द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड्स विथ कंसेप्शन. सो रोल ऑफ हेरिडिटी कौन कि कंसेप्शन ना एंड ही जाउची. सो व्हाट गोज ऑन इनसाइड द होम आफ्टर द कंसेप्शन आर द इंटरनल एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस कौन ये इनसाइड ओम्ब्र भितर जाऊँगी कंसेप्शन पर सेटा आम कौन कहना ना इंटरनल इन्फ्लुएंस रहा जहाँ भी भितर ये होची. दिस फोर्सेस प्लेज देयर रोल approximately from months till the birth of the child and are in fact responsible in many ways of shaping the individual in its true sense that differ not only from mother to mother but also from one child to another of the same mother. आम खाली कहीपर मदर टू मदर बट सेम भी आम कहीपर है. लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट कौन इन्फ्लुएंस हो देखिए जितेबाला गोटे fetus gets its nourishment in the womb indirectly through the mother, therefore whatever the mother eats or drinks have an impact on the growth and development of the child. आम जाने जो मदर जो कौन कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम जहाँ भी मदर्स खाई था पी था से डायरेक्ट इम्पैक्ट थाए कौन चाइल्ड उपर नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ आर डाइट बट ऑल्सो द एनवायरमेंटल अवेलेबल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज क्वाइट इंपोर्टेंट ऑफ द बॉडी इंपोर्टेंट फॉर द बेबी है कि खाली आम कहीपर जो प्रेगनेंसी टाइम कौन मदर खाऊँ पीऊँ एनवायरमेंट भी ये इंपोर्टेंस रोल करता है. Mother remains this worried and anxious and emotionally aspect and mentally disturbed, then it is eventually have an adverse effect on the growth and development of the baby. So it is mother भी यदि कौन कि इमोशनाली रहिले आउ कौन डिस्ट्राक्टेड रहिबे अनिक्सियस रहिबे ताले एटा अफेक्ट करिबा कौन कि बेबी रे डेवलपमेंट ऊपर. सो आम कहीपर कौन इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन चिल्ड्रेन आर द सर्टनली कॉज्ड बाय द वेरिएशन एंड डिफरेंसेस एक्जिस्टेड इन द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ देयर मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम जहाँ भी ये कौन कि मेंटाली हेल्थ थाए तो सही उपर प्रभाव ये पकई दैट इज सेड दैट अबाउट महाभारत यू माइट बी नोइंग अभिमन्यु हैड लर्न द आर्ट ऑफ एंटरिंग इनटू चक्रव्यूह व्हेन ही वाज इन मदर्स ओम है जमी आमको शुणी कौन कि ना चक्रव्यूह केमिति अभिमन्यु एंट्री कला तो सेटा कौन कि मदर्स ओम शिखी इट मे सीन एज एक्स एग्रेसन but it's certain that what happens with the mother and child from the time of conception till birth is responsible for generating significant individual differences है ये कौन कि आपंकर significant individual differences important को affect करता है. At the time of delivery also environment available to the mother and the child affect well है कि डिलीवरी टाइम रे भी एनवायरमेंट भी अवेलेबल होता है मदर आउ चाइल्ड ये भी अफेक्ट करता है जमीक कि बीइंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. हियर द इंडिविजुअल डिफरेंस मे बी कॉज्ड बाय सिचुएशन लाइक प्री मैच्योर और मैच्योर डिलीवरी जमीक कि गोटे नॉर्मल डिलीवरी हो बा हाइजेनिक और अनहाइजेनिक कंडीशन हो बा जनरल एटमॉस्फेयर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी निहाती दरकार. आफ्टर बर्थ ऑल थिंग्स रिलेटेड टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट फिजिकल sociological, cultural, how psychological influence and affect each and every aspect of the growth and development of the child every step and all the time. These external environment influence available to each child are quite different in nature as well as an effect. like ये quietly कौन की था different था nature as well as an effect ऊपर भी ये बहुत प्रभाव है हमारा पकई था. One may argue that children of the same parents or member of the same family have the same environment but this never possible no matter how hard one may try. Even a mother cannot claim paying equal attention care and affection to all her children. so मैं कहीपर जे जन सेम पेरेंट्स सेम मेम्बर बा सेम फैमिली सेम एनवायरमेंट आसो बोली जो मदर जो था ना कि सब चिल्ड्रेन को से इक्वाली केयर नहीं पाए. व्हाइल इन मोस्ट इंडियन होम्स मेल चिल्ड्रेन गेट प्रिफर ट्रीटमेंट ओवर फीमेल चिल्ड्रेन टू इवन रियल बी ट्रीटेड एट द सेम वे बाय देयर ओन पेरेंट्स है जी कहलाटी कहते जे इंडियन पेरेंट्स मैंने कौन करती कंपेरिजन टू गर्ल चाइल्ड से अधिक मैंने केयर नहीं था कौन
male child even if se ଦି ଜଣ ଥିଲେ ବି। The same is also true in case of students being taught by the same set of teacher in the same setup. No teacher can provide exactly the same treatment to all of his students. କେଉ ବି teacher କ'ଣ କି ସେମ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। Thus, as the reality speak, all children cannot be brought up in the same home, cannot reside in the same neighborhood. ହେଲା କି ଆମେ କହିପାରିବାନି ଏଠି ସବୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କରିକି ଆସିପାରିବେ କ'ଣ ସେମ୍ ହୋମ୍ ବା ସେ ରିସାଇଡ଼୍ କରିବ ସେମ୍ ନେମ୍। ସୋ କ୍ୟାନଟ୍ ଗେଟ୍ education in the same institution or get the same social, cultural or physical setup. Hence, individuals are bound to differ significantly from each other in various ways. So, various ways रे एठी हम differences देखिले। So, अब देखिए हमर inter and intra individual differences कौन जे कि हमर क्वेश्चन आउस। Now, inter individual difference are difference that are observed between people. है इंटर इंडिविजुअल माने कौन जे कि लोक मान भर आम जोटा को ऑब्जर्व करते इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस कह जाए। इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस आर डिफरेंस दैट आर ऑब्जर्व विदिन द सेम पर्सन है सेम पर्सन भीतर जोटा को देखी था डिफरेंस से आम कहते कौन इंट्रा है। देयर आसेस एट डिफरेंट टाइम्स और डिफरेंट सिचुएशन। एन इजी वे टू रिमेंबर दिस एज इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस अकर विदिन द सेम पर्सन। इंट्रा इंडिविजुअल अकर सेम पर्सन। गुड एग्जांपल ऑफ इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस आम कहीपर जमीक कि जेंडर, एज, एथनिक बैकग्राउंड, एनेक्सिटी लेवल, अटैचमेंट स्टाइल, अटेंशन और एफर्ट आर गुड एग्जांपल ऑफ इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। सो इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस आम कहीपर ये अटेंशन और एफर्ट को कहीपर। सो ये कौन कि किसी फैक्टर भी भेरी करता है बोथ बिटवीन and within individual dependent on this context. So it is important to consider the full experiment when deciding if something is an inter-individual difference or in intra-individual differences. Let us take effort as an example. Some people are going to put in more effort than other. किसी लोग कौन कि अदर ठाकू कौन कि अधिक एफर्ट दौरान. This could be for many reasons, perhaps because they have a greater interest in the test. लाइक सपोज टेस्ट ग्रेटर इंटरेस्ट थाए तो सी अधिक अधिक ये कौन देवे एफर्ट लगे जार इंटरेस्ट नथिबो से एफर्ट लगेबेनी। सो सही सिचुएशन में एफर्ट इज एन इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो एफर्ट आम कहीपर कौन इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। अल्टरनेटिवली इफ वी टेस्टेड द सेम पर्सन मल्टीपल टाइम दे मे पुट मोर एफर्ट इन द फास्ट टेस्टिंग सेशन है। सो जदि आम कौन कि सेम पर्सन को मल्टीपल टाइम्स कौन कि टेस्ट को से एफर्ट कौन करेंगे ना फास्ट टेस्टिंग सेशन और लेस्ट इन द लेटर टेस्टिंग सेशन। सो फास्ट टेस्टिंग सेशन से अधिक इंटरेस्ट देवे। सो परहाप्स बिकज दे आर मोर ट्रायड कहीं अधिक अधिक ट्रायड हो। इन दिस केस द एफर्ट someone puts in an intra individual differences है because a single factor could be both an inter individual difference and an intra individual difference. Telling the difference can be difficult, but if you look at the context as whole this will help. We can go through some more example. It would be helpful. आम अधिक अधिक एग्जाम्पल भी ये नहीं पार तुम निजे तो किसी प्रोब्लेम ए ना। तो इंट्रा बुझे तो आम इंडिविजुअल डिफरेंसेस आम कंप्लीट करदे। सो नेक्स्ट क्लास रे आम आउ किसी टॉपिक नवा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।